हो गई है। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में मिलिट्री से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री से, ऑफ कोर्स मिलिट्री से, जनरल आसिफ मुनीर से ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को, कहाँ चले गए। आपने नाम लिया तो जमाने में तो शायद वो मेजर ये भी नहीं होंगे, आई डोंट नो, कैप्टन होंगे, so he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan, and they can, if they have some information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But this petition is also about. उनपे भी आते हैं ना, पहले आपका पर्सनल कंसर्न तो हो जाए ना, वो तो फिर बात की बात है. Can we have a report if there is some information? My lord, I have taken down the details. And if whatever has happened, all she says is, if I can know the truth of the matter. Yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. There's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information, they will tell you. So can you sort of, we'll pass the order, but unless you want to add something. My lord, ये भी देख लीजिएगा जी साहब, अगर there is an opportunity or option of constituting second GIT, अगर GIT में होगा तो उसमें कई लोग होते हैं. GIT में क्या है वो देखिए, वो GIT ये देखते हैं, इनको कम से कम जवाब दे देंगे. वो एक खाना पूरी हो जाएगी, कुछ उसका इफेक्ट नहीं होगा. उसमें my lord कुछ भी नहीं होगा. She's gone through the process. Yeah. Now, if it can be once again done with a fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence, whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. My lord, तो ये जरा आप देखें that she has been in the forefront, not only for her own husband but for others also. ठीक है. So the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defense. My lord. These are or any other? It's Ministry of Interior essentially. And Ministry of Defense. Because she says she's alleging it against Pervez Musharraf. So that comes Ministry of Defense. He was president at that time. Ministry of Defense. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defense. So let it be taken seriously, and we expect that if it can be resolved. Lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the new government came and absolved itself. They said, "उन्होंने किया था, बता दिया." तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise, there's a question mark hanging all through, forever and ever. My lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Musharraf at that time. Yes. And then he said we have no interest in him. So she said so. You heard it correctly. So a person may still not tell the truth. So I will furnish report on that. A lot of time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, if nothing more than just the truth. ठीक है? My lord, I have noted. अच्छा, अब बाकियों का केस बताइए आप. My lord, ये जो फर्स्ट तो यही है कि ये बताइए कि मिसिंग पर्सन्स के जो आप तो काफी इससे मुंसलिक रही हैं. जी जी. ये सबसे ज्यादा कब हुए थे मिसिंग पर्सन्स? ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ज्यादा हुए थे, और फिर उसके बाद कंसेक्टिवली जब ये पीपल्स पार्टी का दौर आया तो ये चीज खत्म नहीं हुई बल्कि चलती रही. सिमिलरली इन PMLN, BTI एंड देन कोलिशन गवर्नमेंट एंड देन केयरटेकर. तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जब से 9/11 से लेके आज तक ग्राफ ऊपर नीचे तो होता रहा है. आजकल भी ये बात हो रही है? जी सर, हो रहा है, आजकल भी हो रहा है. आप एक सेकंड ठहरिए, मेरे को बात करने में. जी बताइए. जी सर, आजकल भी हो रहा है, ये केसेस आ रहे हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस हो रही है.
नहीं, जैसे शोएब साहिब साहब कहते हैं ना, किसी को उठाया फिर छोड़ दिया, वो वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं। हम वो वाले बात कर रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं। जी जी। ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए, हाँ जी, खुद आ गए, दस्तयाब हो गए, जो बात है वो एक अलग इशू है। बिल्कुल। हमारा जो jurisdiction है वो habeas corpus की jurisdiction है। When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. जी। Then jurisdiction becomes criminal or civil. ठीक है, habeas corpus की jurisdiction limited होती है, produce the person. ठीक है, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. तो अब हमें बताएं, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर, हो रही हैं इस तरह से। नाम है कि लोगों के वो किधर हैं? माय लॉर्ड, क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो नेचुरली सरकार से हम पूछेंगे तो भाई फला मोहम्मद इदरीस कहाँ है, वल्द फला फला, तो वो फिर हमें जवाब देंगे ना। अगर हम एक जनरल बात कहेंगे, वो क्या जवाब देंगे हमें? लॉर्ड, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये कोर्ट, क्योंकि हमारी इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता रही हैं और तकरीबन 18 में से 15 साल मैं यहीं पर पेश होती रही हूँ। और इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए अब हर चीजें एक दौर बदलते जाते हैं ना। जी। कुछ लोग मिसिंग पर्सन आज भी, मगर वो उठाए गए हैं, आपने कहा 2005 में या 2002 में, ठीक है, तो वो यकीनन इस हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं ठहरेगी ना। तो फिर भी अगर आज ये गलत काम कर रहे हैं तो हम उनको रोक सकते हैं। दो बातें हो गई, देखिए इसको जरा सा क्लैरिफाई कर लें। हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर हमें टाइम नाम दे दें और पीरियड्स दे दें ना, तो दो बातें हो सकती है। एक तो हो गए पुराने मिसिंग पर्सन्स, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं जी। एक दूसरा है कि ये चीज को रोका जाए, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। एक है उनको दस्तयाब करवाया जाए, वो अलग हम जरा उसको करना चाहते हैं, लॉजिकली चलना चाह रहे हैं। तो हम कम से कम पुराना तो नहीं मसला हल कर सकें शायद, अगर आज वाला तो हम कर सकते हैं ना, रुकवा तो देना सारी बातों को, मिसिंग पर्सन को रुकवा दें। बिल्कुल सर, मैं यही चाहती हूँ कि आप जब इसकी कॉग्निजेंस लेंगे तो इसकी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होगी कि क्या ये स्टेट तो की पॉलिसी तो नहीं बनी। आज ही हम इनको हुक्म देते हैं कि भाई रोक पॉलिसी रोक दी जाए, कि लोगों को उठाना कम से कम लिस्ट स्टॉप हो जाए, तो फिर हमारे पास सिर्फ पिछले ही रह जाएंगे जिनको रिकवर करना होगा। Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance. If you give the statement today, and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. This is a statement of law, and no, but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf. Naturally, he may be retired tomorrow, transferred tomorrow, so we can't hold him responsible. But it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was a pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what.
They're so confused. अब भी आपने अखबार में पढ़ा कल या आज के अखबार में था कि 6 नाई को मार दिया वजीरिस्तान में। जी 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 जी। देखिए ये जहनियत, जो लोग कत्ल करते हैं उनको कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है किसी चीज का। तो इस दुनिया में तो चलें वो शायद कानून की गिरफ्त में ना आए, मगर आखिरत में क्या करेंगे? मतलब आखिरत में क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? तो देखिए ये स्टेट को भी ये जो माइंडसेट है उसको चेंज करना होगा। ये कोई कोर्ट एक फैसले करके कुछ नहीं कर सकती है। That's right. जब तक ये पूरा मशीनरी इस माइंडसेट को चेंज ना करे। और जी ये पता नहीं क्या करने आ रहे हैं। अब आपने बलूचिस्तान में भी लोगों को कत्ल किया जा रहा है एथनिसिटी ग्राउंड पे। देखिए ये कोई सलूशन आज तक किसी ने कोई कत्ल और गारत से कुछ पाया नहीं है। तो नहीं कोई जेन्युइन आपकी बात है, आप आइए पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शन करवाइए। जब इलेक्शन हुए थे लास्ट वाले में था चीफ जस्टिस बलूचिस्तान में, बड़ी मुश्किल से हमने सारे इलेक्शन कराए और कुछ एलिमेंट्स नहीं चाहते थे इलेक्शन हो, because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. ये एक अखबार की सुर्खी लगी, ऑर्डर पास हुआ, इससे कुछ नहीं होगा। I think the state needs to be definite statement should be given by you in writing by the government. ये कमीशन जो था मिसिंग पर्संस का, ये वजूद में है या नहीं है? है सर, है। कौन हेड कर रहा है? It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court 100. in 2011. 11. So Yeah, he should be now, what, 77, 78? 77? आप आए हुए वहाँ से, कमीशन से आए हैं, रजिस्ट्रार हैं आप कमीशन तो आप सामने आइए। ये कितने लोग हैं इस कमीशन के मेंबरान? सर यहाँ पे जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं और साहब शरीफ विर्क साहब रिटायर्ड, शरीफ विर्क साहब, मोहम्मद शरीफ विर्क, मोहम्मद शरीफ विर्क। ये कौन है? ये रिटायर्ड आईजी है जी। और कोयटा में है हमारे जस्टिस अमानुल्लाह खान यासीन जई जी। ये वॉलंटरी है या इनको तनख्वाह मिलती है? सर। हाँ तनख्वाह मिलती है सर, तनख्वाह मिलती है सर। सेक्रेटेरिएट है पूरा। कितना आपका बजट कितना है? सर मैं अंदाजा नहीं होता, पता होगा सेक्रेटरी को ही, मुझे पता नहीं। मेरा ख्याल 4-5 करोड़ का होगा। तो आप करते क्या हैं? रजिस्ट्रार हूँ सर मैं कमीशन का। नहीं तो ये बस ये सर वो तनख्वाह लेने के लिए कमीशन है या कोई और काम नहीं कर रहा है? नहीं काम करता है सर कमीशन वाला। पता है ना, कराची में हमारे जस्टिस आपकी एनुअल रिपोर्ट आप जारी करते हैं, मंथली करते हैं, करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, मंथली भी करते हैं। कितनी रिकवरी कराई है आपने आज हमारी तक? तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी। तो हमने बलूचिस्तान में रिकवर किए वो भी आप अपने पास डाल देते हैं कि हमने रिकवर किया है। नहीं कितनी रिकवरी मंथली क्या है रेशियो आपका रिकवरी का? मैं अभी आपको पर्सन्स का ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट जनाब को देता हूँ। लेटेस्ट नहीं, वैसे ही बता दीजिए ना, महीने में कितने रिकवर करा, कितनी दफा मीटिंग है? बता देता हूँ। नहीं बात सुने, आपकी मीटिंग महीने में कितनी दफा डेली कंटिन्यू होती है सर। क्या डेली होती है? डेली होती है, उसमें लोग आते हैं मुतासिरीन के सारे घर वाले, ISIM, IB सारे सब डिपार्टमेंट्स आते तो हैं। फिर रिकवरी कितनी होती है महीने में, क्या एवरेज है? यही मैं कहने लगा हूँ सर, इस महीने में हमारे 46 जो है ना ये डिस्पोज ऑफ हुए, ये रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ। और 46 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकवर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजी के दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं। सर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सर ट्रेस्ड कह रहे हैं, ट्रेस्ड किधर आपकी रिपोर्ट किधर है? ये है ना, ये कागज का टुकड़ा है, दिखाइए क्या चीज है। 91 देखे तो सारा उसमें दिया था जो इनके देखते हैं। नहीं ये तो कुछ भी नहीं है ना, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बाकी है। ये लिखा है कि आप आज कितने मिसिंग पर्सन्स हैं आपके रिकॉर्ड में? ये लिखी हुई फिगर टॉप पे ना, बता दीजिए ना। जी
ये जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2022 7001, डिस्पोज ऑफ से क्या मुराद है भाई? या रिकवर हुए या नहीं हुए? सर मैं मुख्तलिफ किस्म आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए ना। देखें जब रिकवर होते हैं, बहुत से वो रिकवर होते हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो बता देते हैं फलाना केस में कस्टडी में है। असल में सर ये चार रिपोर्ट इसमें नहीं है जो अब आजकल मिसिंग पर्सन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो वो तो हमें नहीं पता, हमारे पास जो केस आता है उसका पता होता है हमें। आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आपके पास आजकल केसेस आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर। आपका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सर ये G91 में सर। हाँ, G91 ये क्या घर है? नहीं सर, ये सिविल डिफेंस बिल्डिंग है सर, अच्छा, उसके अंदर है। नहीं तो आपके पास फॉर इंस्टेंस दिसंबर 2023 में कितनी केसेस आए हैं फ्रेश? सर ये बताने लगा 46 केस आए हैं सर। फ्रेश? जी फ्रेश। अच्छा, इनका क्या बना? सर ये प्रोसेस शुरू कर दिया ना इसका हमारा। उससे पहले हम JIT बनवाते हैं, उसके बाद एटी क्या चीज है? ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। क्या चीज है बताएं, कौन होता है उसका मेंबर? उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन होते हैं और साथ में रैप होते हैं IB के, ISI के, MI के या होम डिपार्टमेंट के। इसके 5-6 लोग। ये आप बताएं, ये मिस जंजू आप गई इस कमीशन के सामने? यस माय लॉर्ड, जब ये बना था 2011 आप में। इससे मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन हैं? मुतमईन नहीं है हम लोग। हम और लोग से मुराद हम और तमाम जो विक्टिम्स हैं जो वहाँ पे पेश हुए आप भी केस में हैं? इसमें आपके साथ इनाम साहब जो खड़े, आप भी इस केस में हैं? I'm assisting, madam. I'm working with her, sir. ये आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? Not at all, sir. हाँ? Not at all. कोई मुतमईन नहीं है सर। Dispose of किए हैं. Honorable ने बड़ा ये एक सेकेंड, तो लंबी बात नहीं करें, आप मुतमईन हैं या नहीं हैं? dispose of जो है इसमें हाँ, आप सिर्फ हाँ या ना बता not दें। satisfied, sir. Not एक सेकेंड, इत्तेज़ाज़ साहब आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? नहीं नहीं, बस सिर्फ पूछ रहे मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? नहीं नहीं, मुतमईन है या नहीं मुतमईन? हद तक है। नहीं सवाल सिर्फ ये। बस बस ओके। अच्छा एक रजिस्टर ये यहाँ जो आज जो केसेस हैं, कोई मुतमईन है कमीशन से या नहीं है? नहीं है सर। मैं भी नहीं, कोई मुतमईन नहीं। अच्छा ये 2023 तक आपने 10,088 केस लिखे हैं। ये कब से शुरू हुए हैं 10,088? सर ये टोटल हो गए जो नहीं, हमारे नहीं, पास मेरा सवाल सुने। 2011 से सर। सुने, नहीं, आप देखिए रजिस्ट्रार हैं, आपके पास माय लॉर्ड जो पूछ आप रहे हैं ना, रजिस्ट्रार हैं, आपके पास एक- फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। देखिए एक नंबर से हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें नाम से है। ठीक है, फला शख्स मिसिंग हुआ इस तारीख को, आपके पास रिपोर्ट आई इस तारीख को, ठीक है, वो उस वक्त का जमाना मतलब ईयर हमें पता चलेगा ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उधर जाती है। तो ऐसा डेटा आपके पास है? जी है, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया सारा। सुने ना, आपने ये कॉस्मेटिक वैल्यू ऐसी रिपोर्ट बनी हुई है, आपने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस अप टू दिसंबर 2023 10,088। ये 10,000 कब से शुरू हुए हैं ये केसेस? ये अब इनके हस्बैंड तो सर ये पहले मैं अर्ज करता हूँ, ये पहले एक कमीशन एक बनाया था सुप्रीम कोर्ट आपको ईयरली बनानी चाहिए ना, जो पिछला डिस्पोज हो गया, बैकलॉग पूरा लेके चल रहा है। आपको यही नहीं पता 10,000 केस कब से पेंडिंग है आपके नहीं पास? सर, इस पेंडिंग वो लिखे हुए नीचे जो पेंडिंग इस वक्त है वो भी नीचे लिखे हुए। अच्छा, ये 3 लोगों का कमीशन है, मोहम्मद शरीफ विर्क, अमानुल्लाह यासीन जई साहब और जावेद इकबाल साहब। और जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और कौन? जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और डेली असेंबल होते हैं, कैसे आते हैं कराची से? नहीं वो कराची में करते हैं, उसी इनके केसेस वहाँ करते हैं। अलग अलग करता है, अलग अलग बलूचिस्तान के जो है वो कोयटा में होते अच्छा, हैं। और रिकॉर्ड रखते हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के कौन है? वो इस्लामाबाद से ही जाते हैं, हमारे जज साहब जाते हैं या शरीफ विर्क साहब जाते हैं। और पंजाब से? पंजाब में भी, पंजाब और फ्रंट ये यही मेंबर हैं फिर? जी 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 5 लोग हैं, हाँ जी। 4 लोग हैं? जी हाँ, हाँ 4 हो गए जी बिल्कुल। Are they paid or are they voluntary work? ये सब पे होता है सर, हाँ? पे करते हैं सर। अभी जो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हैं उनको हाई कोर्ट का पैकेज जो होता है वो मिलते हैं। अच्छा, तो वो तो उनको पेंशन मिलती है वैसे ही। पेंशन तो लेता है ना सर। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर है उनको सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह है, जो हाई कोर्ट से रिटायर है उनको हाई कोर्ट की तनख्वाह है, यही है। उनको क्यों मिलती है तनख्वाह? के अलावा हाँ? क्यों क्या जवाब है? नहीं मतलब समझ नहीं आ रही बात। हाँ, जी ये अटॉर्नी जनरल साहब से। उनका पैकेज तो वही होता है ना जो वो लास्ट अटॉर्नी जनरल सर्विस कर रहे होते हैं। अटॉर्नी जनरल
Do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of a news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up. The presidential order related to the terms and conditions of judges. थोड़ा सा जोर से बोलिए. I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges. It is Whether quite post-retirement can they, if they are required to do any दोनों work. जो आप जो बात कर रहे हैं, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस. कोई भी रिटायर होता है, जब नई जगह जाता है, उसको वही पैसे मिलते हैं. हाई कोर्ट से है तो हाई कोर्ट की है, एमलमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है. दिस इज इन एडिशन टू द पेंशन. Right. So I was not No, aware, but there is another order, I'm aware of it, that if a government gives an assignment to a retired judge, that's what I was. they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is because recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But it's a government assignment, then you're not paid for that. That is part. वो कौन सा ऑर्डर है? ये तो कह रहे हैं इनका बड़ा बजट भी है. ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है? इंटीरियर सर. नहीं, इनसे पूछ रहे हैं आप कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं? वैसे बजट हमारा थ्रू इंटीरियर आता है, अदरवाइज दूसरा इंडिपेंडेंट ही है. इंडिपेंडेंट अलग बात होती है और गवर्नमेंट में किसी जगह तो आपको बजट जाता होगा ना, इंटीरियर में, फाइनेंस में, किसमें, ह्यूमन राइट्स में, लॉ में, किधर ऑफ इंटीरियर आता है बजट हमारा. अभी हमारे एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इस वक्त किया है कैबिनेट ने. आपको कुछ पता है इसके मुतालिक? खोजर साहब आप कुछ जिक्र कर रहे थे अभी. बेसिकली किया है वो आपकी इस प्रेमिसेस से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी. बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि जरा मंगवा लीजिएगा. कहाँ लिखा है आपने? आपको पता है? पिटीशन में मैं चूंकि वकील हूँ ना जी इस पे. अच्छा. ये आसन की पिटीशन मैंने दायर की है. अच्छा. मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. अच्छा. वो जरा मंगवा लीजिएगा सारा. आज तक जो कुछ इन्होंने एक्सपेंडिचर हो रहा है, मीटिंग वगैरह जो करते हैं, बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगा है और उनकी आउटपुट क्या है, स्टार बनाया हुआ. ये कौन से केसेस जो क्लोज हो रही है रजिस्ट्रार. ये अपॉइंट कैसे हुआ? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी जी, my lord, it was appointed under Commission of Inquiry Act 1956 in 2011. Never. जी वो फिर एक्सटेंशन हो रही है from time to time. तो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है. खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी. वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? My lord, this is SRO 149/2011. 134 of which file? ये है. My lord, I have this copy of the कह notification. रहे हैं हमारे पास है. कौन सी ये फाइल बताएं आप जरा, नंबर बताइए फाइल का. दे दे दोनों 161. देना, मुझे देना जरा. उनका उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा, ये गजेट नोटिफिकेशन है. My lord, मेरी ये जो जरा पढ़ ले आप. कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन. My lord, this is SRO 149 of 2011, dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced, and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a commission of inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following, namely, Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Balochistan High Court, Mr. Muhammad Sharif Verk, IGP, retired Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar member. 2. ये पेमेंट की किधर है बात? बजट और ये. The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely. ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था. नहीं, प्लस कर दिया है. To trace whereabouts 30 into. वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे. अच्छा, फिर इसका वो किधर है पैसे?
My lord, there's only this Commission clause will have it its says that independence. independent Huh? secretariat with auxiliary staff. That's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए. I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. ये 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था तो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं. Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it 136 was for Kamal Mansoor Alam, जो कि 136 persons My lord, and for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो My extend lord, होते वो that is now कब बना है 2011 में. नहीं, tell us. आप हमें बताएं, जरा ज़बानी बताएं. Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sahab. If your lordship may see the paper book on page 1, I've attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that contains really most of the answers to this issue. Which? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? G. Retired here, as your lordship is, he was illegally removed by Pervez Musharraf. He was illegally removed by Pervez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath. Acha, okay. No, then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was? No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप index ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि individual cases के हवाले से क्या हुआ, उस पे क्या recommendation हुई, उस पे क्या compensation award हुई, वो इस report में दी गई है. I would not attach the entire report, sir, with the annexures, but I'll place that before your lordships. Or then it was substituted by Justice Jabari. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where page? Sir, if your lordships may kindly see. ये report confidential थी, ये public कब हुई है? Sir, ये फिर public तो नहीं हुई, लेकिन ये copies have been circulating, sir. खुद अपनी report में लिख रहे हैं कि confidential report है. The copies, sir, page अगर आप 38 देख लीजिए kindly. अगर आप पहले अगर kindly पहले 27 देख लें. ये तो जो इनकी फाइनल प्रोसीजर रिकमेंडेशंस इनके हैं पैराग्राफ 57 पेज 40 के ऊपर, वो तो इन इफेक्ट करते ही है ना. जेआईटी तो बना दी इन लोगों ने हर चीज में. The main problem commission का ये है, और ये secretary साहब इसको reconfirm करेंगे, is that this of course is not the first time your lordships have taken notice on this issue. Supreme Court has been active on this issue since 2006. The last order which was passed is very important, sir. Page 61 of this paper book. वो critical order, and sir, that is the first suggestion I would give in terms of a resolution to this problem. Page 61. A special implementation bench was created by this court regarding page 61. Relevant पढ़े? जी. Sir, page 61. On the last date of hearing, 26/9/2018, this matter was fixed
before a three-member bench of this court, headed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. The operative part of the order passed on the said date is reproduced herein below. After hearing the applicants, we deem it appropriate that a special bench be constituted to supervise the proceedings before the Commission, particularly with respect to the cases in which production orders. Now, मैं ये explain करूँगा थोड़ा सा बाद में sir. Production orders were issued by the Commission, but the same have not been complied with, and monthly reports shall be submitted by the Commission to such special bench for perusal of the honorable members. It also directed that all the matters pertaining to missing persons which come to the Supreme Court be referred to the Commission for adjudication and disposal. This case is to be fixed before the special bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan. It is very much clear from the above order of this court that a direction was issued to the office of this court that all matters/cases relating to missing persons which come to this court shall be referred to the Commission of Inquiry on Enforced Disappearance for adjudication and disposal. Therefore, the office is directed to comply with the direction of the court given in the order dated 26/9/2018 immediately. The Registrar of the Commission on Enforced Disappearance present in court has substituted a report through CMA number so-and-so which is placed on record. Now, this is the critical operative part. However, the Commission on Inquiry on Enforced Disappearance is directed to submit a detailed report regarding the cases so far dealt with by the Commission, i.e. the status of each case, and if the case/cases have been disposed of, details thereof. That's the first direction. The second direction, the Commission shall also submit a separate report regarding the cases where production orders were issued by the Commission, and so far those cases have not been complied with. The requisite report shall reach this office for approval in chambers within 1 month positively. So this notion of production orders under the regulations is critical. When the Commission, after an initial inquiry... I don't understand. If you don't know where a person is, how can you issue production order? Yes. What the Commission does is that it does an investigation, and if it comes to a prima facie opinion on the basis of the evidence that this is a case of enforced disappearance. Now, when the term enforced disappearance is used, my lord, it by definition means that the abduction is by state officials. It can't be a private kidnapping. So when it only issues a production order when it comes to the conclusion that prima facie this is a case of enforced disappearance. Now the Commission, without knowing the whereabouts, somebody has to say that the custody is with us. The oral evidence of that. Now the reason why the Supreme Court passed this order is, and this will be confirmed by the registrar, is 645 production orders have been issued. ये 2018 का ऑर्डर आपने पढ़ा जी। अब 2024 में है, इसके बाद कुछ हुआ होगा ना? इसके बाद इस केस में जहां तक मुझे मालूम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 750 कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 2022 में स्टेटमेंट ये दिया था कि 645 प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैव बीन इशूड टू द रेलेवेंट एजेंसीज, ओनली 51 हैव बीन कंप्लाइड विद. इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी एक प्रोडक्शन ऑर्डर जरा पेज 66 पे देख लीजिए. That is the critical thing. That's the problem with the Commission, is that their orders are not complied with. Page 66. इन्होंने तो ये तो पूरे क्लोज ही कर दिए केस. ये वो भी मैं आपको दिखाता हूं. इनको मार करके दिया है, मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया. नीचे ये लिखा हुआ है क्लोज ड्यू टू नॉट बीइंग केसेस ऑफ पूरी रिपोर्ट नहीं है. इनकम्प्लीट एड्रेस, विड्रॉल बाय कंप्लेंट्स, नॉन प्रोसिक्यूशन. ये पूरी नहीं है. ये जो स्टार स्केरिक बना हुआ है, मैंने इनसे पूछवाया, कह रहे सारे केस ही बंद हो गए. तो ये पूरे 10,000 केस बंद हो गए. सिर्फ पूरी नहीं है. मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं. मैंने पूरी रिपोर्ट read it. Page 66 अगर देख लीजिए. पढ़ लिया. Since these orders, there are 645. Amna has just informed me that there are now 700. Yet Commission itself has come to the prima facie opinion that this is a case where the relevant officials of the state are involved, and those orders have not been complied with. और हुआ ये उसमें से one step at a time. जी. Attorney General, मैं आपको रिपोर्ट पूरी देख लूं. have a look at the production order. जी सर.
मैं बोलना नहीं चाह रहा ये सैंपल के तौर पे मैंने रखा है। My lord. हाँ तो वो तो वही कह रही थी, वो तो यही बात कह रही है। ये चीज सही बात है। तो इसका क्या हुआ फिर? रिस्पेक्ट है ना, कुछ रिस्पेक्ट करता है ये। If these production orders, it's a government constituted commission, and the government constituted commission has ordered something, then what happens now? He's saying that these production orders are not being complied with. I think under the Commission of Inquiry Act 2017, the commission has the powers. Contempt. Power the judge of Supreme Court, sir. And if नहीं, वो तो to ठीक see है ना, those powers were ever object exercised. is not to send people to jail. No, but The what I'm object saying is to, if the people are illegally detained, to set them Right. free. जी. वो तो बात की बातें हैं। So I'm just आप punishment में हम punishment मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। that's right, sir. अगर हम punishment में फौरन चले गए तो मसले का हल नहीं होगा। That's right, sir. That's right. No, I'm just with regards to the production orders. I mean, I'd have to check with the commission what happened. I mean, check this is कर लें। 2020, नहीं, 10 December 2020. So, देखिए, what we can, I'm just thinking now aloud, subject to what everyone says, that let the government, because production, you are directed, the government is directed in one form or the other, that you have to give us some response to a production order. That's right. Yes, no, whatever, no, we want to keep him, he's being tried in a court of law. I don't know, whatever the reason is. But it has to solicit a response, some response. Of course, this is not the responsibility of this government, because this, for instance, this production order is dated 2020. Yeah. ठीक है, 10th November 2020. So we don't put the burden on your heads, but at least we want to know what you have to offer. So we will certainly give you time. And ये सारे production orders, if we tell the commission to provide them to you in a tabulated form, name, parentage, address, whatever, so we can easily traceable, and then you can submit a comprehensive response report, unless you have some better solution. I think that's ना कमीशन के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं ये उनके सामने है 193 के पावर है उनके पास और वो अगर इन्फोर्स करा नहीं सकते अपने ऑर्डर्स तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं I think what my lord the chief तो justice उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर द 2017 एक्ट आप बताएं, आप जरा माइक अपनी तरफ कर लें। जी, ये अगर जनाब पेज 29 मेरी पिटीशन जो है, नंबर इसको शायद अभी तक नहीं लगा। हम आपके ऑब्जेक्शंस ओवररूल कर दिए, आप उस पे उसी पे अटके हुए। नहीं, मैं ये तजवीज देना चाह रहा हूँ इसमें। कौन सा है? ये पेज 29। अब नंबर, अच्छा नील, नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20, हाँ मिल गया। उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे हैं ना, आपने प्रपोज किया है कि ऐसा कमीशन मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है, पैराग्राफ ग्राउंड एफ है। ये ग्राउंड एफ में जो लाइन 8वीं लाइन है, द पिटिशनर therefore urges this honorable court to set up an effective and purposeful commission in exercise of powers conferred upon this honorable court and Articles 187 of the Constitution, Order 32, Rule 1 and 2, read with Order 36 of the Supreme Court Rules 1980, coupled with the principles of Civil Procedure Code, as was done by this honorable court in the case of Watan Party, PLD 2012, Supreme Court, comprising of the following. Now, the ones that I suggest. देखिए, Aitzaz, we are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that
the commission has apparently done some work. You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government, why have they not been complied with? That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened, because nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup. Let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. सर मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस जो इनकी कमीशन है जो बनी हुई, इसमें इनहेरेंट डिसेबिलिटीज और डिफेक्ट्स हैं। एतजाज साहब, मैं आपको ये अर्ज करता हूं, आप चाहते हैं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बने जिसके 2 साल अभी भी रिटायरमेंट में बाकी हो, तो वो तो मुनासिब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जज के खिलाफ रेटिंग नहीं सर, मैं अर्ज करूं उसकी वजह यह है, ये कमीशन जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली लेगा, ये बड़ा सीरियस मैटर, विद रिस्पेक्ट। Therefore, I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, ताकि वो 2 साल के tenure में वो कुछ कर सके। आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? हम ये जो चीजें, या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए, या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे। फिर आपका एतराज यही होगा कि जी, क्योंकि नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को, ठीक है? तो वो नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, कितने बेंचेस हैं आपको पता है, कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है। तो ये जरूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियां आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले। ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो, नॉट पार्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम, तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है, या तो उसको कहे अच्छा आप केसेस ना चलाओ, बस यही काम करो। सर इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना, वो पार्ट टाइम भी नहीं है, वो फुल टाइम। आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें, एक दिन में तो नहीं होंगी ना, मगर जरा से ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को। जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, आपने अपॉइंट किया था उनको? जी सर, मैं और क्या कहें आपको, तो आपकी हुकूमत ने, सॉरी आपने नहीं किया, तो अब आपकी हुकूमत ने थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना, अब हम थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में। मैं मेरा जरा सुन ले जो स्ट्रक्चर है जी। अब आपने जो देखा है ना, इसके आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जी पाकिस्तान बार, ये सिविल सोसाइटी, आप जरा सुनिए ना, हमने बहुत दफा तजवीजें मांगी हैं, वो इंडिविजुअल पे होता है। कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रेसिडेंट कहते हैं यार ये क्या मुझे काम करना है मुफ्त में, ठीक है? तो वो भी देखें हम, ये बर्डन हम प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अब ये अगर ये बॉडी मीट ही नहीं करेगी, कभी काम ही नहीं करेगी, डेडिकेटेड लोग होना चाहिए जो कि अगर काम करें। आप असेंबली नहीं कर सकेंगे, इतने सारे मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में। कल को कहेगा जी मैं तो रिटायर हो गया, वो एक टर्म का टर्म होता है, हर साल इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शनियरिंग में लग जाते हैं, फिर वो केसेस भी हमारे सामने नहीं कभी चलाते हैं कि जी अब इलेक्शन हो रहा है आप मेरा केस अर्जन कर दें। तो ये इसमें जरा सा हम देखें एतजाज साहब, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your Lordships can yourself appoint the commission. The commission appoint हुई है
देखिए वो दो किस्म के कमीशन होते हैं ना, एक होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो पावर उनका है, वो गवर्नमेंट का है, हमारा पावर है, गवर्नमेंट का, एक आपका पावर है, आपकी पावर को एक्सरसाइज करें। और मैं इसमें जरा एक चीज जो मैंने सिविल सोसाइटी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव बंदे नॉमिनेट करने को कहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, द पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रेसिडेंट्स ऑफ four provinces. Why? Sir, they are. अभी ये बाकी देखिए the mix. Give me a reason. Reasons because they will they have an urge to pursue. They will. और हमारे बार एसोसिएशन में हर साल इलेक्शन हो जाता है, तो नया बंदा आएगा, कोई हमारा नया मैंडेट लेके ये एक रोस्टर ऑफ द बार इलेक्शंस कंपटीशन में हो जाएगा। अरे वो आने देना, उनके कमेंट्स आते हैं, अगर सिविल सोसाइटी को वो ऐड करना हो तो उनका काम है नॉमिनेट करना और इसको नोटिफाई करना ना। जी सर, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, आप ये दो देखिए, डायरेक्टर जनरल sorry to interrupt. ISI. एक second. Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. जो scheduled at 3 o'clock. ठीक है, We don't want to. We are taking this case seriously. ये हम इसको कल फुल कोर्ट तो नहीं, वो बेंच तो नहीं, 11 बजे लार्जर बेंच है। PFUJ को भी मैंने इसमें PFUJ and two senior officers, senior most officers of the Inter-Services Intelligence and the IB. ये वो तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात करें ना, कमीशन, वो लेट द अटॉर्नी जनरल टेक सम इंस्ट्रक्शंस एंड उसमें देख सकते हैं, अगर वो नोटिफाई करें। अटॉर्नी जनरल आप ऐसा करें, आज we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do, come back with. Monday को हमने भी कोई रखा ना केस, क्या रखा था? Sir, I'm appearing for the respondent in two of CPLAs that were filed by the government. सलाउद्दीन होल्ड, थोड़ा सा रुक जाइए। Monday को कुछ और है? There is presidential reference on Monday. Tuesday को क्या? बेंच कंटिन्यू कर दी तो Tuesday को कर लेंगे। उससे भी नहीं पता अगर हम चाहते हैं, ठीक है। कहाँ जा रहे हो? छोड़ना चाहते हो? कमाल है। अच्छा, आप ऐसा करें, come up with some practical suggestions. Talk to Mr. Faisal Siddiqui. Take these production orders. बल्कि हम ऑर्डर डिक्लेयर ही कर देते हैं, लिखें। Sorry, Salahuddin साहब, आप इस केस में? Sir, I'm in CPLA 1503 and 1504. I'm appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the road students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. जी, Salahuddin साहब, हमने withdraw कर लिया। These appeals have been withdrawn. अच्छा, ये बताइए, वो जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसने क्या काम किया? वो ऑर्डर रिव्यू हो गया क्या बाद में? That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. The commission was constituted. नहीं, it was headed by क्या नाम है, सादिक संजरानी। नहीं sir, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक furnish की है sir. वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा, The report was furnished and it is on इसमें record. लिखिए, वो ऑफिस कौन है, स्टेनो कहाँ है? ये रिकॉर्ड कर रहे, ठीक है। ये आपकी नंबर, उसको नंबर कर देते हैं, एतजाज अहसन फेडरल, आपकी एक है 161 है, और यही है ना? उनकी है, खुशदिल खान की है 124। सबसे पहला केस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये क्या कह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं। अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की। इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है ये।
ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना था, इनकी तो कुछ जाती मसले हैं, लेकिन हम जाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में। ये आते हैं, बताइए। तो हम ट्यूसडे को इसको रखेंगे and we want you to, we will direct this commission to provide you with the information, and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report. My lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, it might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. Over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal. All these cases, all these matters pertain to, shall we keep your matters pending or shall we, आपकी भी 3 है ना, 1 2 3 जी my lord, ये withdraw कर 4 जी my lord, withdraw कर ले। नहीं, इनसे पूछना अटॉर्नी जनरल से। जी my lord, the instructions are to withdraw them, sir. The government of Pakistan, which means that the orders will revive. My lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted, the commission has furnished its report. So इसमें देखिए CPLA 1503, 1504, 1505 and 4333, नहीं वो उन 3 का लिखें 2022, CPLA 4333 2021, पहले वो वाला लिखते हैं 2021 का। Learned Attorney General states that he is under instructions that through these CPLAs, orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Learned Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, Learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए। ये इनका पहले लिखें। मेरे ख्याल में अब ये जो इनका नाम है, आमना जंजुआ साहब का पहले, आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें। मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए, या मौसमात लिखें? MRS, ओके, MRS आमना मसूद जंजुआ एक केस में लिख दें, states that her husband, Mr. Masood Janjua, was disappeared on 30th July 2005. When he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that My lord, it's on and that the- she is not, and that she had approached the commission, क्या नाम है इसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था? notification. पेज बताया था ना 220 क्या था? 131. आपने किसी ने बताया था? 131. हाँ? 131. 131.
वो तो law है हाँ ठीक है had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the commission. Full stop. Others present, the commission comprises of, we are informed that the commission comprises of the following: Mohammed Sharif Virk, the chairperson is Javed Iqbal sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the commission is Mr. Justice Retired Javed Iqbal, Mr. Justice Retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice Retired Zia Parvez, and Mr. Mohammed Sharif Virk. As members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the commission. ब्रैकेट में उसको एक दफा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा, ठीक है? उसके ब्रैकेट में कमीशन. Mr. Khalid Naseem, आप सेक्रेटरी हैं रजिस्ट्रार हैं? रजिस्ट्रार सर. Registrar of the commission, however, states that the commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered / returned home. Full stop. इनका लिखने civil miscellaneous appeal number 161/2023. The registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Aitzaz Ahsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Aitzaz Ahsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशी खान का करेंगे ना तो गाड़ी कर देंगे ना सुन के उसी ये करेंगे तो अभी नंबर करके उसको लाओ उसी का रखें नंबर करेंगे तो फिर मेरी बेटी का इशू है ना उसको उसी बना तो लाएंगे ना कि तुम्हारा तो इशू है मिस्टेक बन